Hello, biology lover. In this video, we are starting a new chapter that is locomotion and movement. This chapter is very interesting because we always attract towards the different kinds of bone. 206 bones we have. So let's discuss them and try to learn all the bones. So what in this chapter is mainly types of movements, muscles, skeletal system, joints, and disorders of muscular and skeletal system. Actually, I divided this chapter into two videos. In the first video, we will discuss up to skeletal system only, or maybe before that, and after that, we will discuss all the bones, joints, and disorder. So, here we go. Now, before starting this locomotion, let me tell you that movement is the significant feature of living beings. Now, animals and plants exhibit a wide range of movement. Like, for example, streaming of protoplasm. सिर्फ जो protoplasm move कर रहा है बेटा, unicellular organism में, like amoeba, is also a movement. And the movement of cilia, flagella, and tentacles in number of organisms also show movement. Human beings can move their limbs, their jaws, their eyelids, their tongues, etc. Now, some of the movement, if responsible for the change of place or location, so such movement will be called as locomotion. So, locomotion is voluntary movement of an individual from one place to another. Now, what are the examples of locomotion? Walking, running, climbing, swimming. These are examples. All locomotion are movement, but all movements are not locomotion. Clear हो गया हमको ये? Now, locomotory structure जो है बेटा, वो अलग अलग हो सकते हैं. जैसे अगर मैं पैरामीशियम का बात करूं, तो उसके अंदर सीलिया जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड एज वेल एज इन लोकोमोशन. हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स हेल्प करते हैं फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन. नाउ हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो वी यूज लिम्स. लिम्स क्या होते हैं बेटा? फोर लिम्स में आते हैं हमारे हैंड्स एंड हाइंड लिम्स में आते हैं हमारे लेग्स. सो इन सबको डिस्कस करते हुए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन को डिस्कस करते हुए, ये स्टेटमेंट हमने दिया है दैट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. नाउ methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of the situation. Like generally, locomotion का reason क्या है? Search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climatic condition, or escape from enemies or predators. So these are the things which are needed for locomotion. Now, टाइप्स ऑफ मूवमेंट. अगर हम बात करें कि जो मूवमेंट है, अगर मैं ह्यूमन बॉडी का बात करूं तो बच्चा 3 तरह का मूवमेंट होता है. एमीबॉइड मूवमेंट भी हमारी बॉडी में है, सीलियरी मूवमेंट भी हमारी बॉडी में है, और मस्कुलर मूवमेंट भी हमारी बॉडी में है. मतलब हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल हैं जैसे मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स, जो कि एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं. नाउ व्हाट दिस एमीबॉइड इज? It is affected by pseudopodia formed by streaming of protoplasm, जैसे कि अमीबा में होता है. Now, cytoskeleton element like microfilament are also involved in amoeboid movement. ये याद रखना है बेटा आपको कहाँ कहाँ amoeboid movement हो रहा है. Ciliary movement का बात करें तो in most of our internal tubular organ, जैसे जहाँ जहाँ ciliated epithelium है, एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो ट्रैकिया हो गया, या हमारा पैसेज हो गया, जो लाइक ओवा जहां पास होता है फिम्बो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो यहाँ सब जगह पर क्या होता है? सीलियरी मूवमेंट. अब हम बात करते हैं कि जो मूवमेंट है इन लिम्स, जॉज, टंग्स, इसमें मस्कुलर मूवमेंट है. ये इसमें क्या होता है बच्चा कि जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, which are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organism. So ध्यान से सुनिएगा, लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम. तीनों चीजों का रोल है लोकोमोशन में. लोकोमोशन मतलब सिर्फ स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, ऑफ कोर्स स्केलेटल सिस्टम भी है तो मसल्स भी हैं, और तीसरा ब्रेन तो है ही.
नाउ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा मसल्स के बारे में. व्हाट आर मसल्स? दे स्पेशलाइज्ड टिश्यू of mesodermal origin. What is mesodermal origin? Like I told you, in gastrula stage of embryo, there are three germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. And these three germ layers form different part of our body. So muscles are being formed from mesoderm. That's why we call it mesodermal origin. इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी. राइट, ये देखो जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो आपने अभी रिसेंटली पढ़ा, इसलिए आप रिकॉल कर लोगे. बच्चे, हार्ट के अंदर हमने पढ़ा था एसे नोड प्रेजेंट होता है. व्हाट इज एसे नोड? दैट इज सिनु आर्टरियल नोड विच इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर. हमने बोला उसमें कंट्रैक्टिबिलिटी होती है, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होती है. So they are muscles. They have that contractility, right? Now, muscles have been classified using different criteria. Like उनका location क्या है, उनका appearance क्या है, और उनका nature of regulation क्या है, different activities. So सबसे पहले हम बात करेंगे based on their location. Listen बच्चा, मैं repeat कर रही हूँ. On the basis of mainly 3 categories, we classified muscles: location, appearance, and nature of regulation of their activities. Now here we discuss about location. So there are 3 types: skeletal muscles, visceral muscles, cardiac muscles. अब देखिए बच्चा, what is skeletal muscles? They are closely associated with the skeletal components of the body. Right? नाम से पता चल रहा है skeletal muscles जो skeletal part में involve है. ये कैसी होती है? स्ट्राइप्ड मसल. व्हाट इज स्ट्राइप्ड बेटा? जैसे डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, दीज आर कॉल्ड स्ट्राइप्स. राइट, सो दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, इसलिए हम इसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं. स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स. अब अगर हम इनकी एक्टिविटी की बात करें तो ये कैसी हैं? वॉलंटरी हैं, इसलिए हम इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं. इनका काम क्या है? मेनली लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस इन बॉडी पोस्चर. ये इनका फंक्शन है बेटा. कितना सिंपल चल रहा है देखो. स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे स्केलेटल कंपोनेंट का पार्ट है. अब इसके अलावा इन्हें हम स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर लाइट डार्क बैंड के स्ट्रिएशंस हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं. कैसे काम करते हैं? वॉलंटरीली, एट देयर ओन विल. इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, मतलब इनका प्राइमरी क्या फंक्शन है? दैट इज दे हेल्प इन बॉडी पोस्चर, चेंज इन बॉडी पोस्चर. नेक्स्ट बात करते हैं हम विसरल मसल्स का. दे आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. होलो विसरल ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहाँ प्रेजेंट होता है. दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशंस, मतलब दे आर स्मूथ. So that's why they are called smooth muscles. Now, their activities not under voluntary control of nervous system, and therefore they are known as involuntary muscles. Now, they assist in, like for example, transportation of food through digestive tract and gametes through the genital tract. इसमें हमारा कोई रोल नहीं है बच्चा, ये अपने आप हो रही हैं. सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो नॉन वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, याद रखिएगा प्लीज. अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स. नाम से पता चल रहा है किसकी मसल्स है? हार्ट की मसल्स हैं. नाउ कार्डियक मसल assemble in a branching pattern to form cardiac muscles. Now based on their appearance, cardiac muscles are also striated. तो अगर हम स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी बात करें तो वो स्केलेटल मसल से मैच कर रहा है, और अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो ये किससे मैच कर रहा है? ये विसरल से मैच कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये इनवॉलंटरी है नेचर में. नाउ हमारा बेटा इसका हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. जो स्केलेटल मसल्स है ये बना हुआ होता है मसल बंडल का. जो मसल बंडल है बच्चा, उसका दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है? फैसिकल. अगर आप थोड़ा थोड़ा लर्न करते जाएंगे साथ साथ में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. डायग्राम में देखिए, देख रखा है. ये पूरा एक स्केलेटल मसल है बेटा, जिसमें देखो बंडल्स हैं. किसके बंडल्स हैं? मसल बंडल्स कहते हैं इन्हें. इन मसल बंडल को हम क्या बोलते हैं? फैसिकल्स. ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है, हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फेशिया. देखो पिक्चर में कितना अच्छे से दे रखा है.
Fascicles हैं, आपस में जुड़े हैं with the help of fascia. Now each muscle bundle, अंदर सोचिए, each muscle bundle contain a number of muscle fiber. Skeletal muscles में क्या है? Muscle bundle. Muscle bundle के अंदर क्या है? Muscle fiber. Muscle fiber जो है, अब single muscle fiber को मैं ले रही हूँ, उसका जो मेम्ब्रेन होता है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है, जो सेल होते हैं मसल फाइबर के और नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू के जो सेल हैं वो भी फाइब्रस फॉर्म होते हैं और नर्वस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो भी फाइब्रस होते हैं. तो जो मसल फाइबर की आउटर कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, व्हाट वी कॉल्ड एज सार्कोलेमा. और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म. सो वर्ड जहां आ रहा है बेटा सार्को, आप क्लियर कीजिएगा, वो वर्ड इज फॉर मसल्स. नाउ partially arranged myofibrils are present in muscle bundle. Muscle bundle के अंदर क्या present है? Myofibrils, जो कि दो तरह का, उनके अंदर लाइट और डार्क बैंड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन. नाउ लाइट बैंड जो होता है बेटा, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रिएटेड मसल्स के अंदर लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं. अब लाइट बैंड जो है वो लाइट बैंड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक्टिन प्रेजेंट है और इसलिए हम उसे आई बैंड भी कहते हैं और इसे हम आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं. नाउ डार्क बैंड जो होते हैं उसके अंदर मायोसिन प्रेजेंट होता है और उसे हम ए बैंड कहते हैं. इसके अलावा मायोसिन प्रेजेंट है, लेकिन व्हाई वी कॉल्ड इट ए बैंड? बिकॉज इट इज एन आइसोट्रोपिक. Now both bands are present parallel to each other, right? Now in center of each eye band, बच्चा eye band के बीच में एक लाइन है, I mean eye band के बीच में एक सेंट्रल लाइन है जो कि क्या कहलाती है? Z लाइन. You're getting me बच्चा? eye band के बीच में एक लाइन है which is called Z line. Now in the middle of A band is present M line. And the portion of myofibril between two successive Z line is functional unit of contraction called sarcomere. Actually, यहाँ से word आया है sarco. What is sarcomere? One Z line to another Z line. Functional unit of contraction is called sarcomere. Now, at the resting stage, thin filament overlaps the thick filament. The part of the thick filament not overlapped is called H जोन. बीच में प्रेजेंट होता है H जोन. ये आपके बुक में 305 पे भी डायग्राम दे रखा है. इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा. वेल, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, व्हाट इज दैट? एज आई टोल्ड यू, एक्टिन जो है, थिन फिलामेंट जो है, वो किसका बना होता है? वो बना होता है 2F एक्टिन का. 2F एक्टिन बच्चा याद रखेगा प्लीज. Each actin filament is made up of 2F actin which are helically bounded to each other. Now हर एक F actin जो है बेटा वो किसका बना हुआ है? वो छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के जो बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज एक्चुअली मोनोमेरिक यूनिट ऑफ F actin. F actin क्या है? चेन है. उस पे छोटे छोटे जो आपको ये गोले दिखाई दे रहे हैं बेटा, these are actually G actin. Now, two filaments of another protein, that is tropomyosin, also run close to the F actin. You can see in the diagram through its length. A complex protein, troponin, दिखाई दे रहा है, troponin is distributed at regular interval on the tropomyosin. Now, in the resting state, a subunit of troponin, this troponin you can see बेटा छोटा छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, at regular interval, at the resting state, the subunit of troponin marks the active binding site for myosin on the actin filament. Now, myosin. Each myosin filament is also a polymerized protein. Now, many monomeric proteins called meromycin constitute one thick filament. Each meromycin has two important parts: globular head, you can see, with a short arm and a tail. The head part is made up of, that is heavy meromycin, HMM, and the later part, the tail, is made up of light meromycin. So the heavy meromycin component, the head and the short arm, projects outward at regular distance, an angle from each other from surface of polymerized myosin filament, and is known as cross arm. You can see the diagram, cross arm. The globular head is an
active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active site for actin. बच्चा, मैंने बोला कि जो एक्टिन है उसमें एक साइट है जो कि एक्टिव साइट कहलाती है. उस एक्टिव साइट पर ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है. मायोसिन जाकर बाइंड होता है किसके ऊपर? एक्टिन के ऊपर. लेकिन बाइंड होने के लिए मायोसिन के तो ऊपर प्रेजेंट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, लेकिन एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है वो कवर्ड है ट्रोपोनिन से. सो बिफोर अटैचिंग ऑफ दिस मायोसिन टू एक्टिन, दिस ट्रोपोनिन हैज टू रिमूव, राइट. तो ये अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में. नाउ मैकेनिज्म वाज एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, राइट, जिसमें क्या बताया था? विच स्टेट दैट कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट. नाउ द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन यू नो दैट, जो ब्रेन से आ रहा है, एंड सार्कोलेमा, हमें मालूम है मसल फाइबर की आउटर कवरिंग, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्लास 10 में हमने पढ़ा हुआ है द जंक्शन बिटवीन मसल फाइबर एंड नर्व फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सो एक न्यूरल सिग्नल आता है बेटा सीएनएस से, जो कहाँ आता है? जो आता है जंक्शन पे. फिर एक रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर. द न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन, which actually generate action potential in the sarcolemma. Now, this spread through the muscle fiber and cause release of calcium ion into sarcoplasm. जो आ रहा है बच्चा acetylcholine that generate action potential, and due to which this calcium ions is released in sarcoplasm. Now, when this calcium ion level leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on the active filament, thereby remove the masking of active site for myosin. What I mean to say, this calcium ion remove troponin, which I told you is present on the active binding site. Now myosin lie down on actin, right? Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active site on actin to form a cross bridge. Now, जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा between actin and myosin, which pulls the attached actin filaments toward the center of A band. Now, Z line. I told you this Z line in between the A band, another Z line between another A band. This complete structure, this complete distance is sarcomere. So the Z line attached to these actin are also pulled inward. अंदर की तरफ आएगा बेटा, जिसकी वजह से shortening होगा sarcomere का, and that process is called contraction. And where the I band get reduced, whereas the A band retain the length. Now the myosin releasing the ADP and inorganic phosphate goes back to its relaxed state. Now a new ATP binds and the cross bridge is broken, and breakage is repeated, causing further sliding. Now the process continue till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasm. अब बच्चे सब कुछ उल्टा हो रहा है. Return to the back, normal position, which is called relaxation. Now the role of calcium in cross bridge formation, you can see the troponin is present on the actin binding site, right? When calcium enters, this actin binding site is open. Now the myosin can lie upon it. This is also one of the presentation. You can see during the contraction, the length of sarcomere reduce, and during relaxation, the sarcomere length is, big. Now here you can see, this diagram is actually given in your book itself. आप इसको देखिएगा, page number 307. I'm sure आपको ये समझ में आ जाएगा. But if you want to see this, you can see this also. This is given in our book, beta. You can see, like for example, this is actin filament, another one is myosin filament. So this myosin filament attached to form a cross bridge with the actin filament. Now when ATP breakdowns to ADP and inorganic phosphate, this come back and the breaking of cross bridge takes place. This is all in this video. We will discuss about different bones in our body, like 206 bones are there, you know that, right? So we will try to learn all the bones and name, of course, and discuss about the different disorders, joints between